पंच आमचे मैदानात दिसतात रुपेश गावस आणि त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत अभिजित तळेकर. सलामीची जोडी ही मैदानात सज्ज होते. सामना सुरू होतोय मैदानात. तर पहिल्या षटकात गोलंदाज सज्ज होतोय विल्सी आपल्या बॉलिंग मार्कवर आणि सलामीची बिनीची जोडी ही वझरीम क्रिकेट संघाची मैदानात सज्ज होते. नाणेफेक जिंकली डिझेल बॉईज अंजुना क्रिकेट संघानं. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. पंचांचा इशारा होतोय. सामना सुरू होतोय. आजच्या तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना या दोन बलाढ्य संघादरम्यान मैदानात सुरू होतोय. पहली गेंद लेकर विल्सी अपने बॉलिंग मार्क पर और स्ट्राइक एंड पर बैटर है यतीश. आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया. मिडा पर मौका. एक हाथ से कैच को पकड़ते हुए पहली गेंद पर हाफ वाले पर एक मिस टाइम शॉट बिल्कुल जो कि पावर प्ले का ओवर था. मेरे ख्याल से मिड से खेलना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ पर दाद देनी पड़ेगी. शानदार फील्डिंग. एक हाथ से बिल्कुल हवा में थोड़ा सा गोता लगाकर कैच को पकड़ा और बिना खाता खोले काफी निराशा के साथ वापस लौटते हुए बल्लेबाज यतीश. पहला धक्का लगा विजरम क्रिकेट टीम को. डीजे हेरम शेट्टी का साथ देने के लिए और अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी शुरुआत मैदान पर. वेंसी गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट. और बहुत अच्छी गेंद तेज गेंद. इस बार यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में. पावर प्ले का ओवर जारी. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है. एक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है. दो फील्डर है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात. और इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद फाइन लेग पर फील्डर. एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. एक सिंगल पूरा किया. अंपायर का इशारा 22 का और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ बांदेश्वर वज्री क्रिकेट टीम का. टॉस जीता डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम ने. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई मैदान पर. 8 ओवर का मैच है और दोनों टीमों का मैं बिल्कुल अभिनंदन करूंगा कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए. और पिच गेंद मिस टाइम शॉट. क्या मौका बनेगा मिड विकेट पर फील्डर और ये कैच छूटा. एक बिल्कुल अच्छा मौका था मिड विकेट पर कैच का लेकिन गेंद हाथों से छूटी. सुबह के सत्र में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि आउटफील्ड पर थोड़ी सी नमी है अभी तक. शायद 10-15 मिनट के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा. पुलर लेन की गेंद जोरदार अपील. सामने पा गए मिड स्टंप पर और एलबीडब्ल्यू और उसी के साथ दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ. डीजे कलंगुटकर लेकिन एक नाजुक शुरुआत मैदान पर बांदेश्वर वज्री क्रिकेट टीम की. अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला बॉलर के पास से.
और जब तक मिड ऑफ से मिड ऑन पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक रन इसे बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बना स्कोर के खाते में। पावर प्ले का पहला ओवर टॉस जीता डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। सामने बल्लेबाजी को मौका दिया बांदेश्वर वज्र क्रिकेट टीम को और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नाजुक शुरुआत मैदान पर, मैं तो कहूंगा 8 ओवर का मैच है। टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूंगा 100 रन बन चुके इस टूर्नामेंट में और एक लो स्कोर का मुकाबला रहा था 23 का। अगर व्यक्तिगत बल्लेबाजी की मैं बात करूंगा 48 रन विकास देसाई उर्फ भाऊ अमेय क्रिकेटर्स कुर्चोडम क्रिकेट टीम के ओर से एक बड़ी इनिंग खेली थी। बॉलिंग में परिवर्तन सामने से दूर वाले छोर से। सामने दूर वाले छोर से विनायक मुळगावकर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए सामने बैटर अपाली कलंगुटकर। बैकफुट पर निकले, इस बार हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका बना दोनों बल्लेबाजों के पास। अपाली पहुंचे खुद के व्यक्तिगत 2 पर। टीम का स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का मैदान पर। इस बार नीची रही, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही। सबमरीन डिलीवरी। सुबह में शायद पहले 15-20 मिनट आधा घंटा तक ये बात देखने को मिलेगी। जब जिस तरह से जो कि मैदान पर थोड़ी सी जो कि धूप निकलेगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ओवर पिच गेंद बाहरी किनारा, पॉइंट पर मौका बना और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई। थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी, कवर पर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कवर पॉइंट पर एक बिल्कुल आसान सा मौका। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बांदेश्वर वज्र क्रिकेट। गैस पर फर्नांडिस साझेदारी बनानी पड़ेगी मैच में। 8 ओवर का मैच है, 4 ओवर के मुकाबले 5 ओवर के मैच, 6 ओवर के मैच। लेकिन इस प्रतियोगिता में आपको एक अच्छे क्रिकेट के लिए, बड़े क्रिकेट के लिए बिल्कुल मानद्रीम चैंपियंस ट्रॉफी में मौका दिया है आयोजकों ने। 8 ओवर का मैच, मैं तो कहूंगा एक बिल्कुल अच्छा क्रिकेट। और बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर। थोड़ी सी बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करते हुए आते आते लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक एंड पर गैस पर फर्नांडिस, सामने अपाली कलंगुटकर और दूर वाले छोर से एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर विनायक मुळगावकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। और फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार कोशिश थी। विकेट कीपर लगभग आखिरी पल में दूसरे प्रयास में गेंद हाथों से छूटी। शानदार गेंदबाजी। टॉस जीता डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना पसंद किया सुबह के सत्र में निश्चित रूप से। और सामने बिल्कुल एक लड़खड़ाती शुरुआत मैदान पर। ओवर पिच गेंद, फिर से नीचे रही गेंद। खेल इसी के साथ शुरू के 2 ओवर का पावर प्ले का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ स्कोरबोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
समाप्त होने के बाद फील्डिंग में तब्दीली। अब मैदान पर ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन पर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, डीप कवर पॉइंट। अब फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर और वेंसी अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार शॉट इस बार हाफ वॉली पर और कवर पॉइंट बाउंड्री पर उतनी ही सुंदर फील्डिंग। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैच का जारी। स्वीप किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। क्या दूसरे के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज फिर से? जी बिल्कुल, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जब तक फील्डर थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, और फिर से 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। अपाली कलंगुटकर मैच बिल्कुल निर्भर करेगा। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव है। गोवा के साथ पूरे, मैं तो कहूंगा पुणे हो, कोल्हापुर हो, मुंबई हो, सिंधुदुर्ग हो, कर्नाटक हो, खेल चुके हैं। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, लोअर फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को ढीले हाथों से ड्राइव किया, आना आना कर रहे थे, गलती कर बैठे और अंपायर की उंगली ऊपर, थोड़ा सा बीच में मेरे ख्याल से अपाली रुक गए मैदान पर, और वहीं पर एक शानदार थ्रो, विकेट कीपर ने भी बिल्कुल उसको अच्छी तरह से कलेक्ट किया और तब तक अपने पॉपिंग क्रीज से थोड़ा दूर रह गए। बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ मैं तो कहूंगा वापस आउट होकर निकले, और एक सफलता मिलती हुई डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम को। डीजे और ऐसे मौके पर जबकि बिल्कुल अपनी टीम एक संकट के साथ गुजर रही है मैदान पर, क्योंकि शुरू में 3 विकेट बहुत जल्द खो दिए थे पावर प्ले में, और इसी बीच न्यू बैटर वेंसी अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अच्छी गेंद इस बार, लोअर फुल टॉस, हल्के से इनको ढीले हाथों से ड्राइव किया, क्या बिल्कुल शायद थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन मना किया बिल्कुल अभिजीत ने। मालूम था अब धोखा बिल्कुल अपने टीम पर और संकट बढ़ जाएगा। एक सिंगल बना बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में। बांदेश्वर वज्री क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। 8 ओवर का मैच है, बहुत कुछ खेल बाकी है अभी भी, लेकिन आपको उस हिसाब के साथ, उस ओवर के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने बिल्कुल सही लाइन पर दिखाई दे रही है डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम। टॉस जीता, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रही है मैदान पर। एक कैच जरूर छूटा है अब तक, लेकिन वो बात छोड़ दी आज, तो अच्छी फील्डिंग। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, वहीं पर बिल्कुल दबाया, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन इसी बीच में। अटेंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ गोली मैदान पर खेलती हुई, एक ओर से अभिजीत तो दूसरी छोर पर, जबकि गैस्पर फर्नांडिस। वेंसी अपनी बॉलिंग मार्ग पर। तीसरा ओवर मैच का जारी। अच्छी गेंद हल्के से सिली मिडॉन की तरफ, और फिर से अपने पाड़ोतर में जब तक जाते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक शांत क्रिकेट मैदान पर, क्योंकि विकेटें बहुत जल्द खो दिया है मैदान पर। आने वाले 5 ओवर का अभी भी खेल बाकी है। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बांदेश्वर वज्री क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 12 रन 4 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
चौथा ओवर लेकर सामने विनायक मुळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ। अल्टी पल्टी बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, एक रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। 4 विकेट पर 14 रन, खेल जारी चौथे ओवर का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट। आपको खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, अच्छे गेंदों को आपको हमेशा सम्मान देना चाहिए, और वही क्या अभिजीत ने सामने। और फुल टॉस गेंद बहुत ही लाजवाब, और आज के तीसरे दिन का पहला चौका। 4 रन के लिए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। चौका लगाते हुए इंतजार करना पड़ा वज्री क्रिकेट टीम को चौथे ओवर तक पहले बड़े शॉट के लिए, लेकिन सही है 8 ओवर का मैच है। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ आते, सफाई के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते, और फिर से 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 19 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर मैच का जारी। बहुत ही शानदार आयोजन, अच्छा मैदान, बड़ा मैदान, और सामने बिल्कुल जो कि निसर्ग रम्य परिसर। फुल टॉस बॉलर के पास से इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, फिर से 1 रन बड़े आराम के साथ। एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, जब बिल्कुल आपके विकेट गिर चुके तो आपको एक साझेदारी बनानी पड़ेगी बीच में, और वही मैदान पर कर रहे दोनों बल्लेबाज। 20 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, थोड़ा सा अपेश खेला इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन इस बार निश्चित रूप से दूसरे रन के लिए निकलेंगे। लॉन्ग ऑफ से जाते, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। देखते देखते बिल्कुल आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद बांदेश्वर वज्री क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई 22 लॉस ऑफ 4 विकेट, 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स में रुक करते आज सुबह के सत्र में स्वागत करते, आइए आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर हमारे साथ शुभम परब के साथ। थँक्यू डीजे सर। 4 ओव्हरचा खेळ झालाय, टॉस जिंकला होता डिझेल बॉयज अंजुना संघाने। टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय, आणि सध्याच्या घडीला जे चित्र मैदानावरती बघायला मिळते, जे धावफलकावरती चित्र आहे, जो आकडा आहे, त्यावरती तो निर्णय सध्याच्या घडीला तरी त्यांच्या बाजूने बघायला मिळतोय। 22 धावसंख्या झाली आहे 22, आणि आतापर्यंत 4 गडी गमावलेत। नवीन बॅटर जो आहे अभिजित कळंगुटकर, अपालीच्या बाद झाल्यानंतर मैदानात येतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला। हलक्या हाताने खेळून काढतोय, गॅसपर एका धावेसाठी टोलवतोय। कव्हर रिजनला निघालेली 1 धाव, 1 सिंगल, आणि धावसंख्या पुढे नेली जाते 23 धावावरती। गोलंदाजी मार्कवर अश्वेश दाभोळकर बघायला मिळतोय। एक छोट्या रनअपसह कमेंट बॉक्स एंड कडून गोलंदाजीसाठी तयार होतोय, आणि समोर अभिजित कळंगुटकर। फार नजर असतील अभिजित वरती।
शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, फटका थोडासा फसलाय, सोपा झेल नसेल नक्कीच. थोडंसं त्या ठिकाणी फिल्डर जो होता तो थोडा त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करत होता, त्यामुळे अशा पद्धतीचे झेल नेहमी सोपे नसतात. 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. सुदैवी ठरतोय अभिजित आणि या 2 धाब्याने टोटल पुढे सरकते 25 धावावरती. थोडस संयमी क्रिकेट. चांगला चेंडू हाताळला जातो ऑफस्टंपच्या बाहेर. अगदी विकेटच्या मागे आपण जर बघितलं तर यष्टीरक्षण अगदी जवळून होत आहे. पुन्हा एकदा फटका थोडासा फसला या ठिकाणी. फाईन लेगलाचा क्षेत्ररक्षक शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये ट्रॅव्हल करतोय, तोपर्यंत निसटलेला हातामधनं झेल मिळतंय अभिजित कंगुटकरला जीवदान. जीवदानानंतर मिळालेली 1 धाव सांघिक धावफलक पुढे सरकतोय 26 धावावरती. कॅस्पर फर्नांडिस ऑन स्ट्राईक. थोडासा बॅकफूट वर जाऊन हलकासा त्या ठिकाणी पंच करतोय. एका धावेसाठी दुसऱ्या धावेसाठी वळण्याचा प्रयत्न झालेला, मात्र त्या ठिकाणी नकार देतोय. नक्कीच सध्याच्या घडीला मी थोडस धावा घेताना 100 वेळा विचार करावा लागेल, कारण आपण प्रमुख खेळाडू हा तुम्ही धावबादच्या स्वरूपात गमावला. थोडीशी झालेली चूक, गफलत, त्यामुळे तुम्हाला एका प्रमुख खेळाडूला त्या ठिकाणी दुर्दैवीरित्या धावबाद व्हावं लागलंय. बीट करतो या ठिकाणी बॅटर अभिजित. चेंडू आणि बॅटचा स्पर्श घडत नाही, एक डॉट चेंडू राहतो. एक चांगली ओव्हर हाताळली जाते अश्वेश दाभोळकर कडून आणि अशा पद्धतीनं 5 ओव्हरचा खेळ संपतोय. एक चांगली ओव्हर टाकली गेली, स्कोर झालाय 27 धावा. अगदी एक निर्णायक ओव्हर अश्वेश कडून. 5 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या स्थिरावतीये 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा, अर्थात पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणावरती मर्यादा येतील. केवळ 3 खेळाडू आपण सीमेरेषेच्या बाहेर तैनात करू शकता आणि त्यासाठी आपण बघू शकतो डीप स्क्वेअर लेग म्हणा, डीप मिड विकेट आणि डीप त्या ठिकाणी थोडस बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षक सजवलाय गेलाय. डावखुरा फलंदाज आहे, हो नक्कीच या एंडने फलंदाजी थोडीशी सोपी होऊ शकते. चला गोलंदाज तयार. रोहन हलक्या हाताने खेळून काढतोय, कव्हर मध्ये चेंडू टोलवतोय एका धावेसाठी आणि एक सिंगल मिळत असताना स्ट्राईक मध्ये देखील होतोय बदल, धावफलकात देखील बदल. धावसंख्या 28. अशोक सर सध्याच्या घडीला आपण या 6व्या ओव्हर मध्ये आहोत. 28 धावा. तुम्ही जसं म्हटलं की सकाळच्या सत्रामध्ये या मैदानावरती आउटफील्ड थोडीशी संत असल्या कारणाने फलंदाजी करणं थोडंसं अवघड आहे, मात्र कमीत कमी इथून मी म्हणेन 60-65 किंवा 70 धावा जर जमवल्या गेल्या तर नक्कीच ती एक फायटिंग टोटल संबोधली जाईल आणि त्यासाठी ही 3 षटकं फार महत्वाची. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. थोडंसं या ठिकाणी मिस टाइम असा फटका, ज्या पद्धतीनं बॅट वरती चेंडू यायला पाहिजे होता त्या पद्धतीने आला नाही. हरकत नाही, एक धाव निघाली. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय, तोपर्यंत एक सिंगल आणि सिंगल नंतर धावसंख्या 29 धावावरती. 29 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. 29 धावा. स्टंपच्या बाहेर थोडीशी भरकटलेली लाईन, पंचांचा इशारा, वाईडचा एक अतिरिक्त धाव ही धावफलकावरती जोडली जाईल. ऑनसाइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न झालेला, मात्र लेग स्टंपच्या कित्येक बाहेर जाणारा हा चेंडू त्या ठिकाणी वाईड घोषित केला जातोय. एक अतिरिक्त धाव मिळते. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, क्रिजच्या खोलीचा उपयोग केला. फटका तर मात्र खेळ, मात्र डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. डीप मिड विकेट मध्ये चेंडू अडवला जातोय आणि तोपर्यंत 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. नक्कीच या सध्याच्या घडीला फलंदाजी या खेळपट्टीवरती थोडीशी अवघड वाटते, मात्र खराब चेंडूंचा देखील मी म्हणेन तेवढ्याच तोडीने समाचार घेतला गेला पाहिजे. थोडीशी मनगटामध्ये आपल्याला ताकदी ओतावी लागेल, तरच तुम्ही सीमारेषा पार करू शकता.
एक चांगला चेंडू, अगदी स्टम्प्स टू स्टम्प गोलंदाजी झाली आहे. त्या ठिकाणी थोडासा सफल झाला होता. पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. डावखुरा फलंदाज आहे, अर्थात थोडंसं एंड फेवर करेल, मात्र त्यासाठी मेहनत मात्र घ्यावी लागेल. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, एलिव्हेशन मिळत नाही. एक जमिनीलगतचा फटका, डीप मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू अडवतोय, तोपर्यंत केवळ एक धाव मिळते. नक्कीच बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेची ओव्हर आहे. तुम्ही त्या ओव्हरची त्या ठिकाणी अवलंब केलाय, म्हणजे अर्थात तुम्हाला धावा या बनवाव्या लागतील, थोड्याशा धावा ओताव्या लागतील धावपलकामध्ये, कारण सध्याच्या घडीला धावपलक थोडा धीमा गतीने प्रवास करतोय. एक चांगली ओव्हर हाताळली जाते. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केलेला, मात्र चांगली लाईन बघायला मिळाली गोलंदाज कडून. रोहन होता गोलंदाज. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेची ओव्हर संपुष्टात आली. अशा पद्धतीनं 6 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 6 ओव्हर संपल्यानंतर स्कोरबोर्ड वरती धावसंख्या स्थिर आहे 30 धावा 4 माफ करा 33 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. कॅस्पर फर्नांडिसला माघारी बोलावलं गेलं आणि एक नवीन पेनल्टी सर ओके माघारी बोलावलं गेलं. नवीन बॅटर मैदानात आलाय आणि ऋतुराज. कॅस्पर माघारी आणि नवीन बॅटर त्याच्या जागी मैदानात येतोय ऋतुराज. माहिती आहे, कारण सध्याच्या घडीला धावफलक केवळ 33 वरती आहे आणि त्यासाठी इथून कमीत कमी 60चं एक लक्ष, 60-65चं लक्ष अशोक सर मनामध्ये असेल. 12 चेंडू निर्णायक चेंडू असतील आणि गोलंदाजी मार्कवर अश्वेश. अकुट टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, अगदी बांधून ठेवणारी गोलंदाजी होती. गोलंदाजांनी आज छाप पाडली असं मी नक्की म्हणेन. ओव्हर टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करतोय, थोडासा या ठिकाणी लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह 38 सर्कलच्या फिल्डरच्या टोळाचा अगदी जवळून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. 1 धाव मिळते, स्कोरबोर्ड पुढे सरकतोय 34 धावावरती. स्ट्राईकला येतोय अभिजित कळंगुटकर. पुन्हा एकदा थोडासा फसलेला फटका, एलिव्हेशन होतं मात्र अंतर कमी पडलं. डीप लॉंग ऑफ मध्ये टिपला गेलेला झेल आणि अजून थोडीशी बिकट अवस्था. मोठा धक्का, अभिजित कळंगुटकर माघारी. डीजे गडी फलंदाजी करण्याची, मात्र तो बाद झालाय. नवीन बॅटर मैदानावरती येतोय विकास. पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीने चेंडू बॅट वरती येत नाही तरी देखील थोडासा मिसटाइम फटका जरी असला तरी 1 धाव मिळेल. एकेरी दुहेरी धावा निघतायत सध्याच्या घडीला. याने केवळ धावपडक पुढे नेलं जाईल, मात्र जर ते याला एक चांगलं स्वरूप द्यायचं असेल, एक विशाल स्वरूप द्यायचं असेल तर मी म्हणेन तगडे फटके खेळावे लागतील. पुन्हा एकदा ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सजवले अगदी त्या क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. डेप लॉंग ऑफ मध्ये 1 धावेसाठी फटका खेळला जातोय ऋतुराज कडून. पुन्हा एकदा एक सिंगल मिळतीये.
पुन्हा एकदा फटका डीप मिड विकेट मध्ये, चेंडू हवेत आहे आणि खाली क्षेत्ररक्षक, अजून एक विकेट, 7वा आघाडी गारत, 7वा धक्का बसतोय बांदेश्वर वज्रीम संघाला. खेळाडू बाद विकास डीजे. थँक्यू डीजे. विकास बाद झाल्यानंतर मैदानात पावलं टाकतोय आकाश नाईक, अजून एक युवा खेळाडू. अगदी फार कमी वयामध्ये ज्या खेळाडूने या टेनिस क्रिकेटमध्ये आपली छाप पाडली किंवा नोंद घ्यायला भाग पाडलं, तो आकाश नाईक मैदानावरती बघायला मिळतोय. स्कोरबोर्डचा जर विचार केला 36 धावा आहेत. शेवटची ओव्हर गोलंदाजी मार्कवर बघायला मिळतोय कुमार आणि धावफलक केवळ 36 धावावरती स्थिरावलाय. शेवटचे 6 चेंडू बघूया केवढ्या आकड्यापर्यंत धावफलक नेला जाईल. पुन्हा एकदा सरळ फटका डाऊन द ग्राउंड, डीप लॉंग ऑन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. क्षेत्ररक्षक येतोय, परतीची फेक करतोय, तोपर्यंत एक धाव मिळते. थोडेसे या ठिकाणी बरोबर कनेक्शन खराब होतं, मात्र चला एक धाव मिळते. इथून जर विचार केला तर नक्कीच 60-65 या धावा व्हायला पाहिजे होत्या. मात्र कुठेतरी मी म्हणेन धावफलकाला जी खीळ बसली ना ती आपलीच्या धावबाद झाल्यानंतर. चांगला चेंडू अगदी ब्लॉक आउट मध्ये टाकला जातोय, तोपर्यंत एक धाव मिळते आणि या एका धावेने पुन्हा एकदा धावफलक हा अगदी धीम्या गतीने एका छोट्या पावलांचा थोडा ढापा टाकत पुढे सरकतोय. यावेळी जोरदार फटका निघाला, मात्र पुन्हा एकदा हा एक खराब फटका संबोधला जाईल. अगदी सोपा झेल ठरतोय. डीप लॉंग ऑन मध्ये हा झेल ठरत फलंदाज माघारी ऋतुराज कळंगुटकर. अजून एक धक्का बांदेश्वर वज्रीम संघाला डीजे. थँक्यू डीजे. नवीन बॅटर मैदानात येतोय दत्ता. शेवटची ओव्हर आहे, बघूया 40 पार करत किंवा 45 आकडा गाठला जाईल का. निर्धाव चेंडू बॅटर त्या ठिकाणी थोडा बीट झालाय. अजून एक चांगला गोलंदाज ठरतोय. फुल टॉस मध्ये चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आहे, बघूया क्षेत्ररक्षक खूप लांबून ट्रॅव्हल करत आला आणि जेल मध्ये त्याने कंप्लीट केलाय. अजून एक विकेट या ठिकाणी फलंदाज बाद दत्ता विकेट ठरतीये आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये ज्या ठिकाणी धावा निघायला पाहिजेत त्या ठिकाणी मात्र विकेट ठरवल्या जात आहेत. सुरुवातीपासून थोडीशी फलंदाजीमध्ये कामगिरी ढेपाळतीये आणि त्याचा परिणाम म्हणजे धाव फलकावरती बघायला मिळतोय. धावसंख्या स्थिरावली आहे 38 धावावरती. एक जबरदस्त असा झेल कौशिक कडून डीप लॉंग ऑन वरनं तो ट्रॅव्हल करत जवळजवळ डीप त्या ठिकाणी मिड ऑन पर्यंत आला आणि झेल मध्ये त्याचं रूपांतर केलं. चांगलं क्षेत्ररक्षण, ज्यावेळी आपण म्हणतो धावफलक कमी अंकावरती स्थिरावलाय. गोलंदाजी बरोबर त्यासाठी त्यामध्ये क्षेत्ररक्षकांची देखील तेवढीच साथ असते. नवीन बॅटर रोहित मैदानात.
फटका तर खेळ आहे, मात्र पुन्हा एकदा एक चुकीच्या पद्धतीने चेंडू हवेत राहतोय, अंतर कमी पडतंय आणि स्क्वेअर क्षेत्रासाठी हा ठरतोय झेल. आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूवरती देखील विकेट, पहिल्या चेंडूवरती या डावाच्या विकेट मिळाली आणि अखेर देखील शेवटच्या चेंडूवरती विकेट ठरत असताना फलंदाजी थोडीशी कमी. वज्रीम संघ या ठिकाणी 38 धावावरती थांबतोय आणि 39 धावांचं लक्ष प्रतिस्पर्धी डिझेल बॉयज अंजुना संघासाठी. एक कमी धावसंख्येचा सामना आहे, मात्र दुसऱ्या बाजूने अपली कळंगुटकर वरती नजर असेल. एक अष्टपैलू खेळाडू. बघूया उर्वरित राहिलेल्या डावामध्ये काय घडेल काय बिघडेल. मात्र मी म्हणेन गोलंदाजीमध्ये शेवटच्या ओव्हरमध्ये कुमारकडून जबरदस्त अशी गोलंदाजी बघायला मिळाली. 3 गडी गारद केले, केवळ 2 धावा खर्च करत असताना सुंदर गोलंदाजीचा प्रत्यक्ष. तर चला वळूया पुढील डावासाठी. मी आपल्याला घेऊन जातोय म्हणजे सहकारी समालोचक दीप आरोंदेकर आणि योगेश परब. तोपर्यंत वळूया डीजेंकडे. होंडा आणि धाडसाकळ सावी वेरे. चला दोन्ही टीम जर आलेले असाल तर लवकर या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी. धाडसाकळ सावी वेरे आणि सातेरी क्रिकेटर्स होंडा. नेक्स्ट मॅच या दोन संघादरम्यान लगेचच सामना होईल, तरी दोन्ही टीम लवकर या. आपली टीम लिस्ट, फोटो सेशन आणि टॉस. सातेरी क्रिकेटर्स होंडा विरुद्ध धाडसाकळ सावई वेरे या दोन संघादरम्यान यानंतर लगेच सामना होतोय. The ground as we are witnessing the glamour, the prestige of Mandarim Champions Trophy. It's the third day we are experiencing the very first match that is being conducted among the two teams. At one side we are seeing the man in yellow, the team that includes one of the most greatest all-rounders in Goa, Apali Kalangutkar. The team Bandeshwar Ozarim, and against them facing a really good bowling lineup of Diesel Boys Anjuna. We are seeing the batting lineup is being completely dismantled and fractured here by the bowling lineup of Diesel Boys Anjuna. If we want to see the first inning, only a single batsman was successful enough to contribute a score of double digit. That was of 15 runs that was being given by the batsman that was Abhijit Kalangutkar. Now let's see, will the bowling lineup of Bandeshwar Ozarim will be able to defend a small target of 39 runs that is being put by them in front of their opponents. Seeing about the first 2 days, the very first team to get qualified for the semi-finals first round, that was the team of Autotech Penjim. We saw the beautiful thrashing by Sahil Vaingankar, and yesterday there was Sindhudurga Derby where 8 teams of Sindhudurga district took part in this beautifully organized Mandaram Champions Trophy. And out of those 8 teams, we saw the one team by the likes of Babal Naik, Daji Naik, a beautiful display of game, all performance by Sujit Savar. The team of No Chance Hodauda had qualified for the semi-final round, and now let's see, this is the round of all the Panchayat teams from Goa state. We are witnessing the first match. It's Bandeshwar Ozarim versus the team of Diesel Boys Anjuna. Umpire indicating start of the match. Ashwesh and Nilesh, the two opening batsmen, the opening duo, and to start off the things, it's Gasper on the bowling markup. Very first delivery, trying a reverse sweep shot. We didn't see any connection between the bat and the ball. As a result, umpire will surely indicate towards the commentary box that the run will be added in form of a leg bias.
Speaking about the first inning, starting off with a wicket and ending off with a wicket, and now the run chase starts with this leg by run. Scoreboard now moves on to a single. This time that's a beautiful connection, and in the very first delivery that he faces, he dislodges the ball into the stands for a massive one. It's the sixer number one, MCT maximum of day 3. TJ. A single sixer was witnessed into the first innings, and the batsman Nilesh, what a way to start off your innings, gets off the mark with a beautiful sixer through the region of deep cover point. Some changes being made to the field set. Here goes the bowler ready from his bowling markup. This time into the trying to bowl to the Yorker's length, but it was converted to a low full toss there by the batsman, because Nilesh knows that the big shot that was required to start off with a good foundation for the team, that sixer is being concluded, and now with the single, scoreboard now moves on towards 8 runs. A small target of 39 to be chased down here. Leaving the ball, thinking that it will be given by the umpire in the form of a punished run, but the umpire says no, that means it was a legal delivery. Such kind of bowling can save you for the team of Bandeshwar Ozarim. Apali Kalangudkar surely disappointed in the first innings in the form of a run out. Now can he contribute with the ball? This time a big shout, and yes, says the umpire, up goes the finger, and here is the crucial breakthrough they wanted. Things getting to be good now here, because Bandeshwar Ozarim is taking the first breakthrough, and the bowler now a comeback, Gasper, after conceding a sixer in the previous few deliveries, and after that sending off the batsman Ashwesh, making his way back to the pavilion. सातारी क्रिकेटर्स होंडा आणि धाड साकळ सावळी बेरे. चला दोन्ही टीम या. धाड साकळ सावळी बेरे, सातारी क्रिकेटर्स होंडा क्रिकेट संघाचं आगमन होतोय. धाड़ साकड़ सावी बेरे, दोनों टीम प्लीज आपकी टीम लिस्ट और कैप्टन, फोटो सेशन, और उसी के साथ कैप्टन टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. आने वाला मैच होगा सातारी क्रिकेटर्स होंडा और धाड़ साकड़ सावी बेरे, इन दो टीमों के बीच में. So now finally the wicket that was required is being caught. The first breakthrough here by the bowler Gasper, now to bowl the last delivery of the first power play over. Conceding out till now 8 runs, and after taking a crucial wicket, Newman in Rohan makes way towards the striker's end. Rohan plays behind the wicket keeper, over run out, but no, says the batsman on the non-strikers, and a complete denial. So with this delivery, we are into the end of the first 6 deliveries, indicating the end of the power play over. We are seeing the scoreboard now moves on towards 8 runs, the fall of 1 wicket. Speaking about the requirement, that is 31 runs more to win and 7 overs yet to come. That means another 42 deliveries and 31 runs to win. Until the next over comes, surely let's hear a melody from SSDJ. Yes, thank you DJ. And now, as we all expected, the second over is now on the bowling markup, the bowler Apali Kalangudkar. The man that needs no introduction, now handling the responsibility of the second over. Scoreboard has reached towards 8 runs. Very first delivery, Apali Kalangudkar, he strikes for a massive banger down the ground. Ball goes for a flat 6 through the long on region. Scoreboard moves on to a double-digit scorecard, 14. This match as soon as possible.
Once again trying to go through the leg side, through the square leg region, but this time a slower delivery comes into picture, comes handy for Pali Kalangutkar. Delivery done in the form of a dot. Two massive strikes by the batsman. This time once again into the route. This is what you call experience. Represented the team of Goa Police for many years and using all of that experience into the crucial match. Now playing from his home team, Bandeshwar Ozarim. Apali Kalangutkar making a beautiful comeback. This time ball goes high in the air. Fielder present becomes a spectator, and the sixer number 2 in this over. Sixer number 3. The scoreboard moves on towards a total of 20 runs. Another 19 runs required. Yes, DJ. For the team of Bandeshwar Ozarim. This time appeal housed umpire towards the justice panel. An extended appeal here, but no impact on both of the umpires as they stand still on their place, indicating another dot delivery. No worries if there are dot deliveries because 12 runs have been concluded till now thanks to the two massive sixes by Nilesh. Into the Yorker's length, and this time the umpire raises the finger, indication that Nilesh has to walk back, but even though he is walking back, he has done the job. Apali Kalangutkar finishes the over with a wicket, and now we are seeing another 19 runs required and a half target being contributed, a total of 90 runs from the bat of Nilesh. Because the crucial player, one of the best all-rounders of Goa, was playing into this match, but unfortunately the team wasn't able to cross even the scorecard of 40 runs, and I would say that is a real good bowling lineup there by Diesel Boys Anjuna. When you have a strong team like Ozarim, Bandeshwar Ozarim in front of you, this is the sort of bowling that you have to bowl. चला दोन्ही टीम लवकर या. सातेरी क्रिकेटर्स होंडा आणि दाडसाकळ सावी वेरे. प्लीज दोनों टीम जल्द से जल्द, आपकी पूरी टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे. आने वाला मैच सातेरी क्रिकेटर्स होंडा और दाडसाकळ सावी वेरे के बीच में होगा. प्लीज दोनों टीम कैप्टन, आपकी टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे. Thank you, Ashok sir. And now the new man in the mix waits Ashok to replace the batsman. And now as we are seeing, it's now the young gun from Bandeshwar Ozarim earning his aim in a very short age. It's Akash Naik coming onto the bowling markup to bowl the third over. After the end of 2 overs, we are seeing a total of 20 runs and another 19 runs are being required to win this matchup. Very first delivery in the powerful toss played down the leg side. Besides the square leg umpire, only a single will be taken. They were trying to take a single easily, and that is taken successfully. Scoreboard now moves on towards 21 runs. Not that big of a scorecard was put up by the batsman from Ozarim, which is a huge setback here for their bowling lineup. This time once again a full toss delivery, but both the batsmen, they know very well that now they no need to make any wrong decisions to strike big six, because the big shot that were required came from the bat of the batsman Nilesh, and surely the job is being made more easy by those two weak shots. Scoreboard now moves on towards a total of 22. This time the strategy is clear. The batsmen are trying to just send the ball down the carpet, not trying to go aerial, not trying to loft the ball, because they know that the match is completely in their hands, and no need to make any half decisions that can put their team in trouble. Now some fielding changes being done, a player now being appointed in a silly region. This time played once again into the short square leg region where the fielder was appointed, where the fielder was planted, but he won't be able to stop that cheeky single going to the wickets. There was a beautiful coordination between both of them.
A single being stolen in the meantime, and scoreboard moves on towards 23 runs. Emphasizing on singles and doubles. This time down the offside behind the wicket keeper, and this is virtual between the wickets. Surely crossed the half pitch because he was so desperate to grab that single, and now after the single run, scoreboard now moves on towards a total of 24 runs. We are seeing the partnership of Rohan and Ashok onto the pitch, focusing on singles as they know this match can be easily won by just singles. Good thinking by both of them. This time the ball taking rise, some extra bounce there by the bowler. More than the expectations, the ball is rising onto the body of the batsman, and as a result we are seeing the 3 overs are being successfully completed. Only 5 runs being conceded from this over, and now scoreboard moves on towards 25 runs. सातरी क्रिकेटर्स होंडा, दाड़ सकल सावी बेरे, लास्ट कॉल आपके लिए, लास्ट कॉल। जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आपकी पूरी टीम फोटो सेशन और टॉस के लिए प्लीज सातरी क्रिकेटर्स होंडा और दाड़ सकल सावी बेरे। So now the coming 30 deliveries, and from those 30 balls the requirement for the team of Diesel Boys Anjuna will be of just 14 runs. I would say it's a really win-win situation, but still until this man has the ball in his hand we can expect really miracles, and only a miracles can save the team of Mandeshwar Ozarim. They desperately need some wickets here from now on this moment if they want to make their way, want to knock on the door of the comeback. It's once again Apali Kalangutkar to bowl the 4th over. Rohan now strikes the ball into the gap. Fielder is running very hard, but in the end the race being won by the ball as it goes away over the fence, kissing the ground for a boundary. Scoreboard moves on to 29 runs. Almost at a verge of a victory, completely making use of this free space in the offside region. Full toss delivery, this time played at the deep backward square leg region, but because of the bad outfield, surely not getting that much of assistance from the outfield, so the ball stops on the backward square leg region as we are witnessing. Another couple being successfully taken, and now the scoreboard moves on towards 31 runs. Another 8 runs required into this matchup for Diesel Boys Anjuna. Played it nicely. This is what you call a sensible cricket. They know match is completely in their grab, completely in their jaws. So let's focus on singles and doubles. And the boundary was required to reduce the equation for the team of Diesel Boys. That boundary came from the bat of Rohan that levels down the score. Scoreboard now moves on towards 32. Another 7 runs required, and more 24 plus 3. That means 27 deliveries are remaining to chase up that target. Into the root of the bowler, and Apali Kalangutkar surely striking back, even though he knows that the team has very less down, and it's the courtesy of Apali Kalangutkar. Scoreboard moves on 32. Wicket number 3, another 7 runs required. Let's move on to our SS DJ. Having his second breakthrough, the second wicket by him, Winsor Newman, and on the strikers end. This time played it nicely, respecting the bowler, honoring the delivery. So the ball will be written in the form of a dot. No matter even if dot deliveries go from here, as only 7 runs are required to win this matchup. Scoreboard stays still on 32. And now the last delivery from Apali. And now a boundary. Once again the match is completely into the grab, completely in the jaws of the team of Diesel Boys Anjuna, the man in red. And now the equation has changed down to और धाड़ सकल सावी बेरे
अगर 5 मिनट में नहीं आ पाए दोनों टीम तो एक एक ओवर कम होगा इस मैच का। दोनों टीम लास्ट कॉल आपके लिए। हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, सातरे क्रिकेटर्स होंडा और दाड़ साकल सावी मेरे आने वाला मैच होगा, बस लास्ट 5 मिनट्स दोनों टीमों के लिए। Only a formality of 3 runs is required to finish this matchup, as we are seeing aggressive field side being coming into the picture. 24 deliveries and 3 runs to win. It's an easy situation here for the man in red, as we are seeing all the fielders within the 30-yard circle. Most of them. Ruturaj into the attack. This time trying to go down the ground, but no connection once again, which leads to a dot delivery. We are seeing an aggressive field set here by the captain of Bandeshwar Ozarim. A loose delivery and making use of that, sends it back towards the long on region where the fielder stands tall, will make sure that the batsman happy with a single, and with that single now scoreboard moves on towards a total of 37 runs. Another couple required. This time played it carefully. There was a half chance of grabbing a catch into the region of slip, but unfortunately the catch is being dropped, and now the scores are being leveled. Only a single run required to win this matchup. I would say only a formality of single run to be completed here in the first match of day 3. A beautiful stroke of into the covers. The drive was so beautiful. The power, and finishes things off with a boundary. An easy win here for the team of Diesel Boys Anjuna. So many congratulations to the team of the Diesel Boys Anjuna, and also thanking the team of Bandeshwar Ozarim for being a part of this prestigious Mandarim Champions Trophy. Analysis of the innings says that not much of a contribution was given by the batsman of Bandeshwar Ozarim, and because of that only a small total was achieved of 39 runs, and after that the batsman, beautiful thrashing there by Nilesh alongside Rohan, also contribution of 12 runs and an easy win here. Remaining 3 overs.